आमना, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे, and I want to know your opinion, both of your opinion about what I said, because I feel like this is exactly what happens when you view yourself as not part of the family of your nation. आप अगर अपने आप को देखोगे कि मैं और मेरी जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो एक अलग फैमिली है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माय कंट्री. सो for me, you know, when I'm even covering the Khalistani issue, पिछले 2-3 वीडियो मैंने खालिस्तान के ऊपर बनाए हैं, and when we talk about the Khalistan issue, people are always like कि तुम सिखों को इतना सपोर्ट क्यों देते हो, ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तान बनाना चाहते हैं. But the thing, how I think of it is, I don't support the Khalistanis. The Khalistanis can fuck off. But what I'm talking about कि सिख जो हैं वो मेरी फैमिली का हिस्सा है. They're part of my national family. They're part of my cultural family. As are the Indian Muslims. They're part of my national family and they're part of my cultural family. Civilizationally, they're also Hindus. Religiously, they're Muslim. Same with the Christians that live in India. Same as the Parsis. Same as the Indian Jews and everybody else that was born and brought up in India. And so that's why I see them as part of my family. So I want to solve the problem. I hate the Khalistani issues. I think they're violent separatists and they should be dealt with by the full might of the police force. But the Sikhs are part of my family. So इस मामले को अगर हम सुलझाएंगे तो साथ में सुलझाएंगे. I don't want to kill off the Sikhs or get rid of them. या क्या करेंगे उनके साथ? भाई हमारा परिवार है. आपके फैमिली में भी आपको बहुत सारा ड्रामा होता होगा. किसी को चाचा से प्रॉब्लम है, किसी को मम्मी से प्रॉब्लम है, किसी को कजन से प्रॉब्लम है, भाई से प्रॉब्लम है. बट आप फैमिली को खत्म थोड़ी कर देते हो, मार थोड़ी देते हो. यू नो, इट्स योर फैमिली, यू हैव टू लिव विद देम. सो यू कुछ ना कुछ करके यू ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट, राइट? एंड दैट्स हाउ आई सी when I cover the Khalistan issue or when I even cover the Islamism issue, कि ठीक है यार, ये अपनी फैमिली है. इस कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे शायद अपनी फैमिली का पार्ट नहीं मानते हो, लेकिन मैं मानता हूं उनको. तो कैसे इनको इन्वॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके. एंड आई वांट टू see how you guys approach it, because when you guys look at India, when you guys talk about Indian issues a lot, or Indian society में क्या problem है, या Indian Muslim society में क्या problems हैं, do you view India in a similar way that I do, or do you view it any differently? You want to start or I should? Your call. You can. So for me, yes, India always has been my family, and everyone within this Indian society, I see them as my family member. But the thing is that then you have a multiple identity also. So I also see Muslim community as a different family, like a little bit nearby family, because I do understand their psyche better. But everyone is my family. And एक story मेरे dad मुझे सुनाया करते थे कि because he was in Indian Navy, तो he used to tell us कि हम लोगों को जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो there is one thing we have been told all the time, कोई क्या सोचता है और कोई कैसे एक्ट करता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त है या कुछ भी है, बट अगर आप एक जहाज पे हो और अगर उसमें एक छेद हो जाती है, इट डज नॉट मैटर कि वो छेद किसने किया है, आप सब डूबोगे. सो यू हैव टू थिंक इन दैट टर्म. सम टाइम आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है. दैट्स वाई वी हैव अ यू नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट. हमें बहुत पॉलिटिकली करेक्ट कई बार बोलना पड़ता है. कई बार हमें सिचुएशन भापना पड़ता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, एंड वी कैन नॉट गो इनटू द कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक कला है. और जब आप अपने ही भाई के साथ रहते हो ना एक घर में, तो देयर वुड सम इशू, ऑलवेज इशू होने ही होने हैं. तो यहाँ तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी में इशू नहीं होंगे, यू कांट एक्सपेक्ट दैट. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर देयर आर मोर गुड पीपल देन द बैड. दैट इज द रीजन कि हम पॉसिबली एक साथ रह पा रहे हैं. अगर आपको लगता है कि सब बुरे थे, तब तो हो ही नहीं पाता. इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल टू स्टे टुगेदर. एंड जब इतनी डाइवर्सिटी है, इसमें जब भी कोई स्टेट एक्शन लेती है तो स्टेट को बहुत प्रोपोर्शनेट होना पड़ता है. इफ स्टेट के एक्शन में जो भी किसी भी चीज पे स्टेट एक्शन ले रही है, अगर किसी कम्युनिटी को लगने लगता है कि उसके एक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म. सो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए इंडिया में बहुत बढ़ जाती है कि दे ऑलवेज हैव टू बी वेरी प्रोपोर्शनेट वट एवर दे आर टेकिंग. आई मीन जो भी इशू वो टेक केयर कर रहे हैं. इसमें कांग्रेस पहले
बिफोर सोनिया गांधी, जब सोनिया गांधी के पास पूरा पावर आया, उसके पहले कांग्रेस वाज वेरी गुड एट इट टू टेक केयर ऑफ ऑल एंड अपीज भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वो बैलेंस बनाने में अच्छी थी। सोनिया गांधी के बाद वो बैलेंस बिल्कुल ही चला गया था, एंड दैट इज द रीजन दे आर गोइंग डाउन एंड डाउन, एंड उनका कोई भी मुझे दिखता नहीं है वापस आते हुए। हाउएवर अभी जो गवर्नमेंट है, मुझे लग रहा है दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक बैलेंस, पॉलिसी वाइज दे आर गोइंग वेरी ग्रेट, बट देयर आर सर्टेन इशू, क्योंकि उनके फिर अपने पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं जब वोटिंग की बात आती है, इलेक्शन की, दैट टाइम दे जस्ट ड्रॉप ऑल द बैलेंस एंड एवरीथिंग बिकॉज देन दे केयर अबाउट विनिंग। सो आई थिंक इट्स अ वेरी, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड हो सकता है, एंड वी कैन टॉक thoroughly about every aspect of it, but yes, we have to in the end think in the term कि ये सारे इंडियन हमारे लोग हैं। You can't like everyone, but if the moment you start othering people, then there is no solution, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको अदर कर दिया है। एंड व्हाट हैपेंस कि वंस यू सी किसी को अदर, जब तक वो अदर परफेक्ट नहीं होगा ना, आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आपका अपना घर का जो बंदा है वो थोड़ी चल जाएगा ऊपर नीचे, बट अदर घर का बंदा तो परफेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। Yeah. The way Khalid, I what see do it, you feel like about that? Because that's how, at least when I started my show, and I often talk about it on my channel as well, I view the nation of India not in just in terms of a geographical entity or not in terms of a political entity, but I view India as a civilizational entity. And so I have a very clear civilizational connection with every single Indian in that sense, whether they're Muslim, Christian, Sikh, Hindus. I have that very clear civilizational connection with them. And that is why even when I criticize, even when I think there are a lot of problems that need to be solved, at the end of the day, it's the civilizational family that needs to sort this thing out together. This podcast that we did with Jay Sai Deepak, there is this one statement of his which resonated very strongly with me. And, it was something on the lines of, why do you do what you do? And, he said, I'm not under this illusion of civilizational resurgence, and I'm at the front guard of it and all. He's like, I don't give my that stuff self that much of pressure, or that kind of thing, I'm now fighting it and all. He said it's very simple. I'm just fighting to save my childhood, from his perspective. And he said whatever festivals we would celebrate from his religious identity, at least they should not be stopped, or the continuation of it shouldn't be. And a lot of people ask me that, why do you do all this? A lot of Islamists go after me, sometimes sections of Hindutvaadis, and communists, Khalistanis, all anti-national elements and all that. And I have a very simple funda for them. Similarly, like Jesai Deepak, I don't, see ki I'm doing. Of course, yeah, there is a lot of passion and love, crazy love for India. But I boil it down to just one simple thing. In my childhood, all my closest friends have said this many times, and I feel it cringe to even say this. They are all Hindus. They are. That's a matter of fact, right? But there's Rahul, right? So if Rahul symbolizes that, and in Rahul's story, there's always a Khalid, right? So when Khalid is in a majority, Rahul has to be there, right? So it's something I'm very batshit crazy about, right? It's very simple that if in his story I'm there, in my story he has to be there. After that, whether a civilization is against me, entire community is against me, world is against me, my childhood cannot be against me. And I see that in my kids today, right? And I love it. I see people from different religions come to the home. I see that same Rahul, Kaushik, Goli, and I see that Christian friend and that Sardar friend come, and I just see the same thing. They come to call him and all. And I'm like, this is also a reality, right? So I'll stick to my reality, I'll stick to my convictions without dehumanizing anybody else. And I'll first be intellectually honest about talking about reforms in my community, right? And there too, I don't want to play on the bandwagon because there is a certain civilizational surge happening. So I will now dehumanize that crowd and also get into this whole nonsensical thing that, oh, unless and until you give up entire religious thing, then only you can be on our side. It's not happening. Religion as a concept is there and is to stay. But one thing I'm very clear about, that just for that idea of me being in Rahul's story, Rahul has to be in my story. Whether people can say it's absurd, they can say it's utopian, hota nahi and all that, but I'm ready to stick my neck out, and whatever be the cost. Kisi ke samne bhi khada hona. Anybody can put their back, turn their back towards me. So I'm very, very clear about it, why I do this.
So yeah, Hmm. True, I feel true. this for Rahul. I'm going to send this to Rahul and then just one thing I Emotional हो want जाएगा to राहुल. one thing I want to add that जब मैं बड़ी हो रही थी तो obviously in India you have this privilege to have friends from all the religious community and everything. So रामनवमी के टाइम पे मुझे नहीं पता कौन सा त्योहार होता है but a lot of Hindu family bring women कन्या छोटी वो लेकर आते हैं उनके पैर वगैरह धोते हैं और खाना वाना खिलाते हैं. So हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें बुलाया क्योंकि उनको लड़कियां चाहिए थी और हमारे घर में तीन लड़कियां थी उस टाइम पे. So we went there and there was no issue that we are Muslim to participate in that function. And they just washed our feet, hand, and खाना अच्छे अच्छे खिलाया, फिर कुछ चीजें दिए, पैसे दिए. And those few things about Hindu society, it touches you so deeply that you want that to have in your own community as well, to be very fair. थोड़ी सी चीजें मैंने बड़ी होते हुए अपनी फैमिली में भी देखी, लाइक माई खानदान में जब भी शादियां होती थी तो देयर वुड बी अ वेज स्टॉल बिकॉज फ्रेंड्स जो आ रहे हैं वो प्योर हिंदू हैं, मतलब वेजिटेरियन हैं, तो दे वोंट ईट. तो वो उनको मतलब अपने साथ अपने जिंदगी का पार्ट बनाने के लिए अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे चेंजेस करते हुए मैंने अपने खानदान को भी देखा. सो आई ऑलवेज एंजॉयड दिस थिंग वेरी मच. एंड देन माई हिंदू फ्रेंड वेटिंग कब ईद आएगी तो हमें सेवैयां खाने को मिलेगी. I love this thing. There is no explanation about it. Well, it's Right? mutual respect, na. At the end of the day, that's what it boils down to. Like mutual respect. आप दूसरी communities को वैसे treat कर रहे हो जैसे आप खुद treat होना चाहते हो. Exactly. And which is the point that I was making in the beginning कि you will always treat your family nicely. आपको प्रॉब्लम भी होगी लेकिन आप मम्मी पापा को ठीक है नाराजगी भी होगी लड़ाई झगड़ा भी होगा लेकिन you will not treat your mother and father or your brother or your sister like ये बाहर वाला है ना बाहर वाले की तरह नहीं ट्रीट करोगे. जैसे अगर मान लो कोई चाइनीज यहाँ पे आके बदमाशी कर रहा है तो you will treat that person differently than you will treat somebody who's your पड़ोसी that you've known forever. You know, True. that's the point that I'm making कि there's a level of a civilizational awareness and there's an understanding that ताली दो हाथ से बजती है and that mutual respect and reciprocity are what successful civilizations are built upon. True. I was just telling my cousin the other day that, since childhood, I have this habit and I really like it. Like, book girti thi and you put your hand and touch it, right? My wife doesn't get it at all. I still do it. मैं तो अभी भी करता हूँ. मेरी I wife still बोलती है do कि it. आप And, छूते क्यों? I Why do you love keep that. touching the book? मैं कहा I यार, love that. And don't like, get if I it. put my Every leg on the Indian book, kid, every I do Indian that. kid उनके दिमाग में ये ingrained है. Yeah. I do that. And I even like, that whole, when you're touching the feet of your elders, I sometimes do that to my bua. She gets very embarrassed. She's like, what are you doing? I just like doing it, So I do that.